All right. So we were doing this chapter system software और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे purpose of an operating system. लास्ट क्लास में हमने शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट ये हमने शुरू किया था और इसके अंदर जो पार्ट हमने कंप्लीट किया था वो बेसिकली था द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एंड अ प्रोसेस दैट एंड अ प्रोसेस. तो हमने इसमें पढ़ा था मल्टीटास्किंग इज बेसिकली इफ इट इज अ सिंगल प्रोसेसर का इल्यूजन है क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज्यादा बेहतर होती है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, हालांकि वो बारी बारी सब कुछ चला रहा होता है. और प्रोसेस का हमने बताया था एनी प्रोग्राम विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड अ प्रोसेस. तो हमने बताया था कि प्रोसेस की तीन स्टेट्स होती हैं, रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक्ड. ऑलराइट, रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक्ड स्टेट होती है हमारे पास. द नीड फॉर शेड्यूलिंग एंड द फंक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट शेड्यूलिंग रूटीन्स ये हमने बहुत डिटेल में सारे के सारे डिस्कस किए थे. ठीक है, आज हमारा जो वो है एरिया ऑफ वर्क वो है हाउ द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरप्ट हैंडलर एंड हाउ इंटरप्ट्स हैंडलिंग इज यूज्ड टू मैनेज लो लेवल शेड्यूलिंग. लो लेवल शेड्यूलिंग मैंने आपको बताया था कि लो लेवल डज नॉट मीन as in discrimination. Low level means that it is closest to the processor. हाँ, बाइनरी टर्म में बिल्कुल प्रोसेसर के करीब तरीन है. हाई लेवल शेड्यूलर जो होता है वो जो बाहर से जॉब्स आ रही हैं उनको डील कर रहा होता है, जबकि जो लो लेवल शेड्यूलर है जो जॉब इन बिटवीन स्टेट्स घूम रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है लो लेवल शेड्यूलर. सो अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस को कि किस तरीके से चलता है. देखें, इट इज ऑल बिट मोर टेक्निकल देन अदर थिंग्स. तो थोड़ा सा इसमें आपको इस तरीके से इसको याद रखना है कि रिलेट करके टॉपिक के साथ और परमानेंटली, ताकि आप लोग कहीं पे भी जो है वो फंसे नहीं, बाद में भूलना नहीं इसको. सो understanding process management, particularly in context of how the kernel acts as an interrupt handler and its role in low level scheduling. इसमें जो है हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसको जहन में रखना पड़ेगा. तो कर्नेल, द वर्ड कर्नेल, ठीक है ना. कर्नेल एक्ट्स, कर्नेल क्या होता है? कर्नेल इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑलवेज देयर इन द मेमोरी. नॉट द होल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, ओनली द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू रन द ऑनगोइंग टास्क. अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट लोडेड बट एज सुन एज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड दे आर लोडेड. ठीक है. तो द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑलवेज इन द मेमोरी and looking after everything that is going on is called kernel. The kernel acts as an interrupt handler in the operating system. Interrupts are the signals to the processor indicating an event that requires processor immediate attention. अब जो है आप बेसिकली इसको इस तरीके से देखें कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरप्ट्स. इन टर्म्स ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स हम जो है वो एएस लेवल में चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके होंगे, तो वो भी आपको एक आइडिया हो गया होगा. सो सबसे पहले इंटरप्ट्स आर द सिग्नल्स. दीज आर द सिग्नल्स टू द माइक्रोप्रोसेसर, सही है, टू द प्रोसेसर, emitted by hardware or software indicating their need of the processor for completion of task, for the completion of task. All right. So kernel's role. What is the role of the kernel? ठीक है, कर्नल क्या करना है? तो कर्नल का जो रोल है, द कर्नल ऑफ an operating system acts as the interrupt handler. In this case, it is basically handling interrupts. Interrupts handler, ठीक है. When an interrupt occurs,
when an interrupt occurs, the processor stops executing the current task, or better call it process, the current process, and transfers control to a special code segment, known as interrupt handler. All right, interrupt handler, or ISR, interrupt service routine, which is part of the kernel. All right. अच्छा, अब इसके बाद आ गई टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। जो हमारे पास इंटरप्ट्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है? टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स हमारे पास जो है, देयर आर हार्डवेयर इंटरप्ट्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। अगर आपने चैप्टर 4 अच्छे तरीके से पढ़ा तो उसमें आपको इंटरप्ट्स का एक बहुत बेहतर आइडिया हो गया होगा। तो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। सो देयर आर हार्डवेयर इंटरप्ट्स फ्रॉम फिजिकल डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है या नेटवर्क कार्ड है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं उनसे आ सकता है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे आ सकता है। इसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेस मैनेजमेंट। अच्छा, प्रोसेस मैनेजमेंट जो है इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले इसमें एक और सब टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जॉब्स जो है वो स्विच कर रही हैं। सो व्हेन इंटरप्ट इज सर्विस्ड, when an interrupt is serviced, the current state of the processor and the process is saved, ठीक है? And the state of the process to be executed, and the state of the process to be executed is loaded. To be executed as in response to the interrupt is loaded. This is known as context switching. This is known as context switching. So basically, when a process is going on, another process with a higher priority arrives in the ready state. तो फिर क्या होगा कि जो करंट स्टेट है प्रोसेस की, वो और जो प्रोसेसर की करंट स्टेट है कि उसमें क्या क्या लोड हुआ है, तो वो जो है दोनों स्टोर हो जाएंगी मेमोरी के अंदर। और उसके बाद जो होगा, क्यों स्टोर होंगी? क्योंकि इंटरप्ट जनरेट हुई है, किसी और जॉब की प्रायोरिटी हाई है। और फिर जो नया प्रोसेस होगा उसकी स्टेट्स लोड होना शुरू हो जाएंगी हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस स्टेट्स होती हैं? कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो रेडी है,
रनिंग है और ब्लॉक्ड है। ऑलराइट, सो हमारे पास रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है एंड ब्लॉक्ड स्टेट है। ब्लॉक्ड स्टेट को हम वेटिंग स्टेट भी कहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड ब्लॉक्ड स्टेट। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास जो अगला मेजर टॉपिक है वो है लो लेवल शेड्यूलिंग। सही है, तो लो लेवल शेड्यूलिंग ये किस तरीके से हो रही है, क्योंकि आपका जो सिलेबस था वो क्या कह रहा था, हाउ द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरप्ट हैंडलर, ये हमने पढ़ा, एंड हाउ इंटरप्ट हैंडलिंग इज यूज्ड टू मैनेज लो लेवल शेड्यूलिंग। तो अब हमें थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हमारे पास लो लेवल शेड्यूलिंग किस तरीके से हो रही है। इफ यू डू रिमेम्बर, देखिए लो लेवल शेड्यूलिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे लो लेवल शेड्यूलर जो है, लो लेवल शेड्यूलर, हाई लेवल शेड्यूलर, ठीक है। जो लो लेवल शेड्यूलर है वो स्टेट्स, इन बिटवीन स्टेट्स जो जॉब है उनको मूव करता है। हाई लेवल शेड्यूलर जो है वो यहाँ पे जॉब को मैनेज करता है, लो लेवल शेड्यूलर जो है जॉब्स को इन बिटवीन द स्टेट्स मैनेज करता है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ। ऑलराइट, तो हाउ द लो लेवल शेड्यूलिंग हैपेंस। तो बेसिकली लो लेवल शेड्यूलिंग, तो वहां पे लो लेवल शेड्यूलिंग में क्या होता है, सबसे पहले रोल की बात करते हैं कि रोल इन शेड्यूलिंग। रोल इन शेड्यूलिंग, interrupts are crucial, interrupts are crucial for preemptive, remember preemptive multitasking। अच्छा, व्हाट डज इट मीन कि देखें, अगर एक जॉब को आप इंटरप्ट करके दूसरी जॉब को ला नहीं सकते तो मल्टीटास्किंग तो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीटास्किंग इज बेसिकली व्हेन ऑल द प्रोग्राम्स आर रनिंग। सो एक प्रोग्राम ने कंप्लीट नहीं भी किया तो यू कॉल इट बैक इनसाइड अनदर प्रोग्राम, वो थोड़ा सा चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर तीसरा प्रोग्राम जाएगा, फिर चौथा प्रोग्राम जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि ये सारा का सारा प्री एम्प्टिव है। अगर प्रीएम्प्टिव जॉब्स नहीं होंगी और वो जॉब्स खत्म होने से पहले ही प्रोसेसर को छोड़ नहीं सकती, तो फिर मल्टीटास्किंग कहाँ से होगी, हर जॉब पहले कंप्लीट होगी फिर दूसरी जॉब चलेगी। हाँ, सही है। सो बेसिकली दे अलाउ प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरप्ट करंट process to give time to other processes, give time to other processes. This forms the basis. This is actually the most crucial part. This forms the basis of low level scheduling. All right. So then there is timer interrupts. टाइमर इंटरप्ट्स की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है। टाइमर इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय द सिस्टम क्लॉक। तो a common example is the timer interrupt. Common example is the timer interrupt, which allows the operating system, which allows the operating system to perform regular checks, and decide
and decides if the currently running process, if the currently running process should continue or be replaced with another one, or be replaced with another process. This is said to be scheduling decisions. Scheduling decisions. All right. अच्छा, अब लो लेवल शेड्यूलिंग के बाद जो चीज हमें देखनी है वो है एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है एंड रिस्पॉन्सिवनेस. देखें, जब भी हम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा सिस्टम स्लो चले या हम कोई क्लिक करें और वो जवाब ना दे, और हम कोई प्रोग्राम लोड करें और वो चलना शुरू ना करे, या हम कोई गेम खेल रहे हैं और हम कोई एक्ट कर रहे हैं और वो थोड़ी देर में फिर इसको रिस्पॉन्स कर रहा हो. तो इस पूरी लो लेवल शेड्यूलिंग का मेन पर्पज ये है कि सारे प्रोग्राम्स इस तरीके से चले. जो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास के एंड में एक चीज पढ़ी थी, और वो हमने क्या पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शेड्यूलिंग. उसमें हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है और हमारे यूजर को उसकी आदत हो जाती है, तो कभी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो सिस्टम है कभी फास्ट चले कभी स्लो चले. उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और जिस वक्त हम जो एक्शन उससे डिमांड कर रहे हैं वो हमें उसी वक्त उसको रिटर्न करें. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें क्या जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बैलेंस. बैलेंस ऑफ वर्क, बैलेंस ऑफ टाइम. सो बैलेंस में आता है एफिशिएंट इंटरप्ट हैंडलिंग, efficient interrupt handling, and process management. Process management are crucial for the overall responsiveness and performance of the system. All right, and then comes priority handling. Priority handling. Most important, most in demand jobs should be handled as per their priority from the user of the system's point of view or from the operating system's point of view to find a balance. All right. So some interrupts like timer interrupt might be prioritized over the others to ensure a smooth operations and effective scheduling. के बगैर ये नहीं हो सकता. और अब लास्ट पॉइंट इसका है एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस के बाद, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलिंग मल्टीपल इंटरप्ट्स. हैंडलिंग मल्टीपल इंटरप्ट्स. एक से ज्यादा इंटरप्ट्स को एक सीरीज में किस तरीके से जो है प्रॉपर से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज होती है
कि हमें इंटरप्ट्स को मास्क करना पड़ता है। मास्क करने का मतलब क्या है कि जब एक इंटरप्ट हैंडलिंग हो रही होती है, अगर आपको याद हो हमने जो चैप्टर 4 पढ़ा था प्रोसेसर फंडामेंटल, उसके अंदर हमने इंटरप्ट हैंडलिंग अभी करी है। इंटरप्ट हैंडलिंग में बेसिकली ये होता है कि आप जब इंटरप्ट्स को डील करना शुरू करते हैं, तो आपने तो पढ़ा होगा, तो जब एक इंटरप्ट डील होनी शुरू होती है तो उससे जो प्रीवियस इंटरप्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाती हैं, ताकि हम एक से ज्यादा इंटरप्ट्स को हैंडल एक साथ ना करें। नहीं तो इंटरप्ट्स जो हैं वो बेसिकली दूसरी इंटरप्ट से मुसलसल इंटरप्टेड होती रहेंगी, तो कभी भी कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। तो एज सुन एज वन इंटरप्ट स्टार्ट्स हैंडलिंग, द जनरेशन ऑफ अदर इंटरप्ट इज स्टॉप्ड, डिसेबल्ड। तो जैसे ही हमारी पहली इंटरप्ट जो है वो कंप्लीट होती है, दूसरी इंटरप्ट जो है उसके बाद, जी हाँ, जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था। सो जब एक इंटरप्ट हैंडल हो रही होगी तो इंटरप्ट की जो मजीद जनरेशन ऑफ द इंटरप्ट है वो आप बंद कर देते हैं। तो जब हमारी एक इंटरप्ट हैंडल हो जाती है उसके बाद हम उसको दोबारा शुरू करते हैं, ताकि कोई भी इंटरप्ट जब डील हो रही हो तो ये ना हो कि दूसरी इंटरप्ट उसको इंटरप्ट कर दें। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंटरप्ट मास्किंग। इंटरप्ट मास्किंग। Sometimes the kernel, sometimes the kernel might disable certain interrupts while handling one, while handling one, to prevent other interrupts, to prevent other interrupts from disturbing the current process, disturbing the current process, interrupt masking, और फिर nested interrupts, disturbance, disturbing, all right, from disturbing the current process. अच्छा, अब इसके बाद आएगी nesting, nested interrupts. अच्छा, कुछ सिस्टम्स में ऐसे भी होता है कि हम इसको अलाउ कर देते हैं, जो हाई प्रायोरिटी की इंटरप्ट्स होती हैं वो लो प्रायोरिटी की इंटरप्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं और हॉल्ट कर सकती हैं। तो बट नॉट इन एवरी सिस्टम, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। बट समटाइम्स इन सम सिस्टम्स, नॉट ऑल, इन सम सिस्टम्स हायर प्रायोरिटी, higher priority interrupts can interrupt lower priority interrupts. Lower priority interrupts. So, in summary, the kernel's role as an interrupt handler is fundamental in managing processes and scheduling them efficiently. सही है ना? So, by looking into so many things, priorities of the interrupts, need of the system, work that is being done by that particular computer system, the number of applications working, ठीक है ना? तो ये सब कुछ ध्यान में रख के सिस्टम उसको प्रॉपर से मैनेज कर सकता है। तो by responding to interrupts and using them to make scheduling efficient, to make scheduling responsive, this is actually very necessary. तो हमारा जो kernel है, the part of the operating system which is always in the memory, it has to run so many processes, so many jobs, so many tasks all together. So without this, this is not possible. This is an ongoing firefighting, जो कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले जो है ना इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें एफिशिएंसी आती है, एप्पल इज नोन टू हैंडल दिस थिंग वेरी वेल।
एप्पल के सिस्टम्स में लैग, एप्पल के सिस्टम्स में क्रैश, एप्पल के सिस्टम्स में एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा बहुत बेहतरीन होती है। तो उसका रीजन यही है कि दे माइट बी एबल टू डू इट बेटर देन अदर कंपनीज। तो बहरहाल दिस इज इट फॉर शेड्यूलिंग पार्ट। ठीक है।